और हम 11th के जो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के कंटिन्यूएंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पिछली वीडियो में बात किया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हम 30 डिग्री के लिए बात किए थे। उसके पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मीनिंग क्या होती है उसके बारे में बात किया था। और हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, भी बहुत सारा चीज़ बाकी है ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसको 1 बाय 1 हम लोग करते जाएंगे। जितना हमारे काम की चीज़ है, जो फिज़िक्स में जिनका एप्लीकेशन है, वो सब सारी चीज़ें, जितना फिज़िक्स में एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो फिर चलिए तो बात करते हैं। ये एंगल 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने कर लिया था। अब जरा वही चीज़ 60 डिग्री के लिए कर सकते हैं। बस जानते हैं जिस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल होगा, वहाँ पर 60 डिग्री का भी एक एंगल होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज इंटरचेंज करनी है, बाकी तो सब वही का वही रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे 45 डिग्री और 0 और 90 डिग्री ऐसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इस पर। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल देखिए, फॉर एंगल 60 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल 60 डिग्री और ओके। तो ये ओ पी ये लाइन है और यहाँ पर ठीक है ऐसे ये एंगल थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। ओके, तो बस यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर पी ये है बेस पी एन और ओ पी ऐसे हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर वही कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री है तो ये तो फिर 30 डिग्री होगा। तो इसके सामने जो साइड है यहाँ पर ओ एन फिर सी, तो फिर कह सकते हैं इसका डबल क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, सो इन द ट्रायंगल ओ पी एन क्या है ये, ठीक, ओ पी इज hypotenuse, PN is perpendicular and ON is base. Okay, so this angle P, okay, angle P, what OPN, angle OPN equals 30 degree. Okay, angle what PON, PON is 60 degree. This implies that angle OPN is 30 degree. Then this implies that ON equals half of OP. Okay, so why ON is side opposite to 30 degree angle। अभी हम क्या ले सकते हैं, सपोज ON इक्वल्स 1 यूनिट, ठीक, वही पैटर्न जैसे हमने 30 डिग्री के लिए किया था, तो वही तो करना है, दूसरा तो कुछ करना नहीं, उसमें वही बात। सो 1 यूनिट, ON इक्वल्स 1 यूनिट, then OP is 2 unit, then PN equals 2 square minus 1 square, and this is √3. So we can write trigonometric ratios. Okay, so ratios are what, कौन सा रेशियो, okay, sin 60 degree
and this is how much? Pn upon On, OP, and this is nothing but root 3 by 2 cos 60, and this is what? On divided by OP, and On is what? 1 and OP is 2, and tan 60. This is perpendicular divided by base Pn divided by On, and this is nothing but root 3 divided by 1 means root 3. Cot 60 degree, these are degrees, okay, and this comes On divided by Pn, and this is 1 divided by root 3, and tan. Next is sec 60. Sec 60 equals OP by On, and this is 2, and cosec 60. So next is what? Cosec 60, and this is how much? This is OP divided by Pn, and this is 2 divided by root 3. So these are trigonometric ratios for 60 degree angle. Now take theta is 0, and the next will take 90 degree. So see, for angle 0. So imagine a 0 degree angle. So this angle, when this angle becomes 0, theta becomes 0, what will happen? ये ऐसा 0 होगा तो P क्या होगा? This OP will coincide with reference line, ना? Reference line से कि मर्ज हो जाएगा. Okay, so 0 degree क्या होगा? So when this theta approaches to 0, okay, theta approaches to 0 degree, what happens? This perpendicular, it approaches to 0 value also. Okay, the perpendicular, the length of perpendicular means Pn, again it approaches to 0. Okay, so this thing approaches to 0. So perpendicular, that is perpendicular is 0, and if this value becomes 0 and OP merges with reference line, OP कौन सी लाइन है? रोटेटिंग लाइन, okay, merges with reference line, reference line, okay, then that is base equals hypotenuse. So base equals hypotenuse, ये base B and equals AH ऐसा. Then clearly you can see the ratios. Then ratios are what? Sine 0 degree. This is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular 0, hypotenuse is there. This is 0. Cos 0 degree. This is base upon hypotenuse, and these are equal. So hypotenuse over hypotenuse. This is 1. Tan 0 degree means this is perpendicular divided by base. Okay, so 0 divided by base, and this comes 0. Okay, and cot 0 equals base divided by perpendicular, and base
upon 0 and this comes infinite. Okay, then sec theta or sec 0 degree, sec 0, and this sec is how much? Hypotenuse divided by base, and these are equal to each other, and this is 1 cosec. Okay, so cosec 0 degree, and certainly it is hypotenuse divided by perpendicular and h by 0, and this comes finite. So these are values of these are ratios for theta equals 0 degree. And so in same way you can draw values for 90 degrees. Okay, for theta equals 90 degree. Okay, then here only I am writing. Okay, let and for angle 90 degree. So when theta approaches 90 degree, okay, when theta approaches 90 degree, what happens? Imagine here, if theta approaches 90 degree, then what happens? This base tends to become 0. Okay, then base ON tends to 0, and this PN increases to OP. Okay, hypotenuse and perpendicular. And perpendicular becomes equal to hypotenuse. So hypotenuse h ठीक means P equals h ऐसा. तब फिर so this base is 0 means base is 0. Next again, then the ratio. Then the ratios are what? Sine 90 degree, and this comes perpendicular upon hypotenuse, and this is hypotenuse equals upon hypotenuse, and this is 1 cos theta, and this is cos 90 degree. This is base on hypotenuse, base is going to be 0 and h is 0. So tan theta, okay, perpendicular upon tan 90 here. So perpendicular upon base, and base is going to be 0. So perpendicular upon this 0, it comes infinity. Then cot 90, base upon perpendicular, and base is 0 or perpendicular is here, then it is 0, and sec 90. Okay, then hypotenuse by base, and base is going to be 0 and h upon 0, and this comes infinite. Cosec 90. Okay, hypotenuse divided perpendicular, and this is coming to 1. Okay, so these are values of angles. So for angle 45 degree, so ratios for angle 45 degrees, and you know these values are what? So as this angle becomes 45 degree, so perpendicular base, so this is 45, this is again 45, okay, and here P
So from properties of triangles, these two angles are equal, then certainly perpendicular bases are equal. So in this case, okay, two sides means क्या है ये, perpendicular and base. Perpendicular and base are equal. Suppose base equals 1 unit, okay, 1 unit, then perpendicular also equals 1 unit, and see here, and this implies that OP means this is hypotenuse, and this becomes this is a root 2, okay, root 2. Then we can write ratios here. So ratios for this angle 45. Ratios for theta equals 45 degree, and this is how what sine 45 degree equals perpendicular divided by hypotenuse, and this is 1 upon root 2, okay, and cos 45, and this is base divided by hypotenuse, and this is 1 upon root 2, tan 45 degree, this is perpendicular divided by base, and this is 1 by 1, this is 1, and cot 45 equals base divided by perpendicular, this is 1 by 1 equals 1, and sec 45 degree equals hypotenuse divided by base, and this comes root 2 by 1 or root 2 cosec 45 degree, and this comes again perpendicular divided by hypotenuse divided by perpendicular, and this is nothing but root 2 by 1 equals root 2. तो ये क्या है, ये रेशियोज है. अभी और भी हम एंगल के मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स के रेशियोज और भी हम दिखा सकते हैं, दे सकते हैं. तो इसके दूसरे पार्ट में हम लोग ये चीज़ करेंगे कि कैसे हम अदर एंगल्स के रेशियोज दें. साथ में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि हम एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब भी इनके लिए रेशियोज लिख सकते हैं. हम इसको अगले पार्ट में फिर लेके आएंगे नए वीडियो में कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको ये रेशियोज फिर हम लिखेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस या कैसे कैसे प्रॉपर्टी या रिलेशंस दिख रहे हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. आप चैनल पर पूरी तरह बने रहें और देखते रहें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर पहले से आप हैं तो आप वीडियोस को देखिए और शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को मोटिवेट करिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लाभ उठाएं इसका. तो थैंक यू बच्चों वेरी मच. आप साथ बने रहें और स्वस्थ रहें.